Let's celebrate the magic of short stories and poems. They are truly magical, aren't they? They make us feel happiness, heartbreak, horror, hope, hatred, and so much more. Namaste people. Welcome to Shweta's Basket, a weekly stories and poems podcast, and I'm your host, Shweta Singh. So what I have for you today can best be described as a poetic prose. It is written in Hindi and is titled Umeed, written by Nirbhay Singh ji. Currently, he is a Class 1 officer with the state government of Madhya Pradesh and holds a master's in mathematics. He enjoys ghazals and watching thrillers and comedy movies. But his heart is that of a poet's, and he writes under the pseudonym Nirbhay. So this is Umeed by Nirbhay Singh ji. कहाँ से शुरू करूं, कहाँ पर खत्म, मेरी अधूरी कहानी मुझे पता नहीं। बस बरसों पहले बारिशों के मौसम में उसे देखा और देखता रह गया। वो खूबसूरती, वो निश्चलता, वो भोलापन भा गया। उसका नशा रगों में छा गया। एक भीगी भीगी सी शामे महफिल में देखा था उसे। सफेद दूधिया परी जैसे उतरी हो आसमानों से। वो परी थी, हाँ परी ही होगी। जब भी मिली दिल धड़का गई, सांसें थमा गई, ख्वाब जगा गई, अपना दीवाना बना गई। अपनी चाहत में डुबोकर मुझे इस दुनिया से अनजान बना गई। आंखों से दुआ सलाम हुआ था। न जाने उन्हें पैगाम मिला या नहीं, पता नहीं। उन्हें कुछ पता हो न हो, पर इसमें उनकी कोई खता नहीं। सुना है दिल की धड़कनें तरंगे बनकर छूती जरूर हैं। सुना है दिल की धड़कनें तरंगे बनकर छूती जरूर हैं। छू कर भी छू न पाई तो कुछ कमी जरूर है। इसके बाद आशिकी बदनाम भी हुई, खूब जग हंसाई भी हुई, पर मोहब्बत को फिक्र कहाँ, उसके सिवा कोई जिक्र कहाँ। उसकी एक झलक, एक दीदार, एक आवाज सुनने को बेचैन मन भटकता ही रहा। दिल को उसकी कमी का एहसास खटकता ही रहा। ये सब एक तरफा था, एक तरफा बेइंतहा इश्क। शायद मुझ में हौसला न था कुछ कहने का, या शायद डर था उसके ना समझने का, या इस मोहब्बत को स्वीकार न करने का, पता नहीं। मोहब्बत की सजा में उम्र कैद ले ली मैंने। सोचा जब तक कुछ बन न जाऊं तब तक सजा दूंगा खुद को। पर जब कुछ नहीं बहुत कुछ बना इस फानी दुनिया के मायनों में, तब भी हौसला न आया इजहार इश्क का। खुदा ये हमेशा गिला रहा कि क्यों न हौसला दिया मुझे अपनी बात कहने का। खुदा ये हमेशा गिला रहा कि क्यों न हौसला दिया मुझे अपनी बात कहने का। पर फिर पता नहीं कहां से हौसला आया ऐसा दर्द सहने का। मेरी बदकिस्मती के सदके एक दिन वो दुनिया के मायनों में अजनबी सी हो गई। मैं बेइंतहा तड़पा, पर उसके हाथों की लकीरें मेरी लकीरों से जुदा सी हो गई। फिर सिलसिला शुरू हुआ ख्वाबों में अंतहीन मुलाकातों का, जो टीस की तरह चुभता ही रहा, अनगिनत दर्द देता ही रहा। ये ख्वाबों का मंजर, न जाने किस जन्म में मुलाकात हो, ये अंतहीन सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। आज मंजिल पर सब कुछ है, बस वो एक शख्स नहीं है। आज मंजिल पर सब कुछ है,
बस वो एक शख्स नहीं है। शायद मेरी गलती है। वो मेरी महफिल में शामिल नहीं और उसका कोई अक्स भी नहीं है। शायद मैं उसके काबिल नहीं, शायद मैं उसके काबिल नहीं या वो मेरे काबिल नहीं। मैं न समझ सका आज तक, न पहुंच सका उस राज तक। अब 20 साल से ज्यादा हो गए, उम्र कैद शायद खत्म हो, अभी भी दीदारे उम्मीद है। न भी हो तो भी मोहब्बत मोहताज नहीं उसकी। मेरी सांसों और दिल में कैद है वो हमेशा हर वक्त। मेरी ही है वो सदा के लिए, जरूरी नहीं जिस्म मिले, पर रूह उसकी मेरी सदा ही है। दुआ है मेरी हमेशा, आबाद रहे वो, सलामत रहे। दुआ है मेरी हमेशा, आबाद रहे वो, सलामत रहे। लेकिन ये भी दुआ है मेरे मौला कि किसी जन्म में हाथों की लकीरें हमारी एक हों। Did you feel it? The deep longing, the soulful yearning. The very first time I read these lines, they tugged at my heartstrings. I am not a romantic person by nature. But through these lines, I felt the poet's pain and his struggle. And even though the love remained unexpressed, it ended in hope, and I loved that. But tell me guys, I really want to know, what would you do? Love someone and tell them and have them reject your love? Or love someone and not tell them for fear of rejection and live life with this endless longing? And while you ponder that, let's move on to the one question section. In the last episode, I had asked you, who informed Mami that Mrs. Gandhi was dead? The right answer is Sabitri Di. And the first one to send the right answer to us was Shikha Singh from Mumbai. So thank you so much, Shikha, for listening to Shweta's Basket and sending us your email. Now we move on to this week's question, and it is, in which season had the poet seen his lady love for the first time? You can email your answers to shweta@shwetasbasket.com. And you will find the email ID in the show notes as well. And we will announce the winner in the next episode. And guys, do join me next Friday, where I'll be narrating a fictional story, of course, based on a real initiative, a progressive, creative program to give people a second chance in life. That story is titled Second Life and is written by Kavitha Yarlagadda. And guys, that brings me to the end of this episode. Do subscribe to my website www.shwetasbasket.com so that you're always up to date with what's new in the basket. And stories and poems are not the only things. You will find book, movie and restaurant reviews in the basket too. And if you enjoyed this episode, then follow or like the podcast, share our episode on your timeline and tag us, and recommend us to your friends. Help us reach more people. Shweta's Basket is available on 18 different platforms like Spotify, Apple and Google Podcasts, Gaana, JioSaavn and others. We're also on YouTube. For the complete list, check out the show notes. And if you want to get in touch with me, I am on Facebook and Instagram, and my handle is Shweta's Basket. And guys, in this day and age, it's a good idea to have a website. So if you're thinking of having one, then listen on, because having a good-looking and professional website is just a click away. In the meantime, this is your host, Shweta Singh, signing off. Till we meet again on the air next Friday. Bye for now. Do you want to have a website of your own?
Are you a writer, photographer, actor, makeup artist, hairstylist, or even a tutor, singer, painter, journalist, consultant? Or do you have your own cafe, restaurant, resort, holiday home, shop, small business, hospital, or even a blog, WordPress, or Blogspot account that you want to migrate to a good-looking website? Well, look no further. The geeks will help you, and you will find them in the Geeks Room at Artoons Inn. Just click on the link in the episode description. Yes, it's that simple to have a website. My website is hosted and managed by them. And want to know what I love about them? They are professional, customer pleasers, straight talkers, and very competently priced. So what are you waiting for? Your website is just a click away.